Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, my dear students, again, I just talk on the strategies for an effective non-verbal delivery. इससे ब्रेक से पहले हमने इसके ऊपर थोड़ी बात की थी, मगर जल्दी में again I would like to explain it. कि there is, you see that importance of your facial expressions as well as your dressing appearance. So facial expressions, you need to show that you are very much interested and you are not worried or angry, or you are not discomfortable. You are not comfortable. You are comfortable, and your eye contact is very important. Just we always discuss for any presentation, for any communication, for any public speech, we need eye contact. अगर विदाउट आई कांटेक्ट हमारी जो स्पीच होगी वो डिमी के लाइक होगी, जैसे कोई रोबोट बात कर रहा है या कोई मशीन बात कर रही है। तो हम सिर्फ हेड हेड टॉकिंग न हो कि हमारे मुंह से सिर्फ अल्फाज निकल रहे हैं, मगर हमारे आई कांटेक्ट, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे हैंड मूवमेंट्स, body you see that movements, all these have very important. All these have very importance for an effective, you see that verbal or non for an effective speech. So show, and the very important thing is this also, show interest in showing sincerity. Sincerity is very important. You must show that you are sincere to the audience. If the audience feels that I am sincere to them, then you will like to take interest in my speech, in my sayings, in my words, in my explanations. Then they will trust me that yes, he is a sincere person. He is a very good person, very good person. Good person. तो मुझे एक याद आ गया लतीफ़ा. So as I was talking about anecdotes means लतीफ़ी, कि वो शायद पहले मैंने आपको ये लतीफ़ा सुनाया है कि एक अंग्रेज पर्सन जो है ना, वो इंटरेस्ट शूज शॉप, जूतों के दुकान पे गया और वो उसने जो है वो एक जूता बहुत सारे देखे, एक देखा उसको जो पसंद आ रहा था, तो मगर वो थोड़ा वो टाइट था, वो शूज में कुछ टाइट था. तो क्या हुआ कि अब दुकानदार समझ गया कि ये जूता इंटरेस्ट ले रहा है इसमें और ही लाइक्स इट, बट उसमें थोड़ा टाइट है, तो उसको क्या करना चाहिए. तो फिर वो सोच रहा था कि मैं इंग्लिश में इसको किस तरह कहूँ. तो मेरी तरह एक टीचर बैठा हुआ था, उसको कहा सर इसको आप अंग्रेजी में बताओ. क्या बताओ? ये बताओ कि ये जो जूता है ना, बूट, ये गुड है, अच्छा है, आप इसको पहनोगे तो जैसे घूमोगे ना, तो ये लूज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. तो अब मैं सोचने लगा कि वो टीचर सोचने लगा कि अब इसका ट्रांसलेशन किस तरह करूं. तो तब तक वो अंग्रेज पर्सन जो है ना, इंग्लिश मैन, ही वाज जस्ट अबाउट टू लीव हिज शॉप. They said, oh sir, listen science, listen. So he, yes, what's problem? He said, boot is good. Boot is good. Yes sir, boot is good. Shoes are good. You walk, it open. You walk, it open. So वो ये है ना कि when you show your sincerity, then the audience will feel good for you. कि yes, he is sincere बंदा. तो इसके बाद जो है कि there is a problem of formal, casual, business casual और smart casual. ये एक ड्रेसिंग कोड है
कि आप फॉर्मल जा रहे हैं, इनफॉर्मल जा रहे हैं, अब घर में आप इनफॉर्मल ड्रेसिंग में हैं, तो कोई आपको कॉल करता है, कॉल बजाता है, so you go out in your informal dressing, and sometimes you surprised to see that person in informal dressing. Otherwise, you always have seen him in formal dressing, well dressed, tie, coat, ये अब वो जो है ट्राउजर में और लूज शर्ट में है, तो वो आपको इनफॉर्मल ड्रेसिंग में लगेगा। तो अच्छा, अब एक बिजनेस कैजुअल है, आप बिजनेस या स्मार्ट कैजुअल है, तो उसमें आपको ड्रेसिंग का ख्याल करना पड़ेगा। सो यू हैव टू ड्रेस अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, अकॉर्डिंग टू द मौका महल के what whether it's a party, it's a business party, or it's friendly party, or it's a picnic, or you are going to appear before an interview committee. You are going to give interview for your job. So meeting all have different scopes. These meetings have all different dress codes. So you need different types of dressing for different occasions, for different situations. So this is, you see that, strategies for an effective non-verbal. Now we come to the new heading, new subheading. Now this is for, you might, we are talking about the, you see that importance of importance of speaking, strategies for effective speech. You see that the strategies for successful speaking. This is whole for strategies for successful speaking, not speaking, successful speaking. Some people talking this successful speaking and listening. This is native way of talking English. You must try to speak in an English tone, but not be so fond of talking in English कि आपको अपनी English भूल जाए। तो कोशिश करें कि you speak English in correct pronunciation with fluency. Try to speak uh, correct and right pronunciation with the right pronunciations. Otherwise, you don't worry. Whatever you speak, at least you must be able to convey your feelings, your thoughts, what you want to communicate to others. This is very important. So we are talking about the successful speaking. तो ये है आपका strategies for effective ये हो गया। अच्छा, ये अभी best way to improve your communication. यानी how can you improve your communication? Naturally, there are some methods, there are some ways. And just think of a simple topic. Example, effects of corona. अब effects of corona के ऊपर आपने सोचना शुरू किया. Think in English. Think in English and talk in lips on the topic, what are the effects of corona. Just try to collect the ideas or things, what are effects of corona virus. People have become sick of coronavirus. All the things have been closed economically. Economics has been down, and workers and laborers are out of job. Markets are closed, and patients do not have good medical care, this and that. You think over it. Okay, what are the exact effects of corona? Uh, now you talk on this corona, effects of corona, effects of corona, corona. अच्छा, तो आप अपने भाई को बिठाएं, बहन को बिठाएं या घर वालों को बिठाएं. So I have said I'm going to tell you about
इफेक्ट्स ऑफ कोरोना, कैसे खतरनाक असरात मरतब हुए हैं, तो what are the impacts of corona virus on our minds, our health. So अब आपने talking start talking, तो इस तरह से you can improve के अपने किस तरह आप अपने खुद से किस तरह बात निकल रही है, हाउ कैन यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स और थॉट्स or whatever the things come about the effects of corona in your mind, you are whether able to communicate it or not. But when you start to communicate the effects of corona yourself before just you are expressing before mirror in your own room and thinking that our whole audience is there. So you are talking जैसे अभी आपको explain कर रहा हूँ ये, तो I feel के my students are before me. I am in the class. Although while sitting, I explain the things. It's very hard for me. I cannot teach. I cannot explain any topic while sitting. I am fond of standing, moving here and there, and using my foot movements, leg movements, and you see that all the parts of my body move here and there. तो बारह जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तो हमें चलना है. Then select another topic, football, cricket. How do you enjoy a cricket match? What do you see in cricket match? What are the benefits of cricket game, football game? In this way, you see that give 3 minutes impromptu speech. Then improper means without preparation, without preparing anything. Then you are not prepared. You are not prepared to talk on the effects of corona. You are not prepared to give a speech on the importance of football game. You are not prepared to speak on the cricket game. So 3 minutes impromptu speech means give without preparing anything. Give a speech without preparing anything. Then give another speech, but by adding more points. Speech time 4 minutes. So now you can have practice in this way. First you talk for 3 minutes without preparation on any topic. Then you talk on the same topic for 4 minutes by adding some more points. So prepare a final speech by thinking about topic, sentence, and body structure of a speech. Make sure you give proper time to the structure of a speech. Now you see that topic sentence there. You have to give the introduction about your topic. Then there is body of this. Then there is the structure of a speech. So you have to give the proper time to the structure of the speech, because only you talk about the introduction, it will be of no use. Yes, you gave introduction, concise, to the point. People come to know that what you are talking about. Then you come on the structure and give proper time to the structure of speech. Right? Now, finally, give speech of you see that 5 minutes. 5 minutes. 3 minutes, 4 minutes, now 5 minutes. 5 minutes. तो अब क्या होगा? टोटल टाइम 15 मिनट्स. पहले आपने 3 मिनट का दिया, फिर 4 मिनट का दिया. इट मेक्स 7 मिनट्स. एंड देन जो पहली स्पीच है 3 मिनट्स की, you have got 2 types, so it makes 6 minutes. And second speech you made only for one time for 4 minutes. It makes 10. You see that
minutes, then final speech of around 5 minutes. Now उसको आप फाइनल कर दीजिए. पहले आपने 3 मिनट की एक दफ़ा दी, उसी टॉपिक के ऊपर फिर 3 मिनट को दें, और फिर उसी टॉपिक के ऊपर you have to talk for 4 minutes by adding some more considered points. In this way, final you gave the speech of around 5 minutes. The total time हो गया 15 minutes. Within few weeks, you will notice a change in your presentations. Within few weeks. अब एक हफ्ते में अगर आप 2 स्पीच इस तरह की दें, you believe me, you can talk any better than any good orator. You will be surprised, astonished. Hangama ho jayega. Oh, with full confidence, with use of your verbal communication and with use of non-verbal communication, you have become so expert to communicate your thoughts on different topics. If any person of your audience just he asks you question on other thing related to your topic, you go on is talking on that topic to answer the question properly and make him satisfied. So this is the result of preparation, practice, and take interest के मुझे स्पीच पर पब्लिक स्पीच जो है ना वो बेहतर से बेहतर करनी. तो strategies for successful speaking and listening. Importance of listening. Communication is more, you see that. Hold it for 1 minute, please. I feel thirsty because talking for, you see that, last 70, 80 minutes again. Now this is, you see that, best way to improve your communication. Now, importance of listening. Now we talked about speaking, importance of speaking, ways to improve your speaking. How can you communicate before the different kinds of audience? So now the topic is importance of listening. वैसे भी हमने हमारा पूरा जो लेक्चर है वो strategies on, you see that, successful speaking and listening. अब speaking पूरा हो गया, अब listening के ऊपर हम बात कर रहे हैं. Communication is more important than ever, yet we seem to devote less and less time to really listening to one another. आजकल जितनी कम्युनिकेशन की अहमियत है वो पहले कभी नहीं थी. It was not so important as it is important nowadays in this modern era, in this modern times. But still we feel, yeah, or it seems that we are not good listener. Everybody tries to be good speaker. To be good speaker to somewhat is, you see that, it's very important, no doubt. But it's easier than the good listener, because good listener needs very patient listening. He must improve himself very patient. Sabar, आराम से, let him talk. So when you talk, when your person whom you are meeting, whom you are communicating, so
he starts when talking, you are listening him. Let him finish. So then you can give the answers, or you can reply all the things, or you can discuss, or you can give the point out. तो बेस्ट कम्युनिकेशन के लिए स्पीकिंग इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट और बेस्ट कम्युनिकेशन speaking is important, no doubt, to convey your thoughts, your programs, your ideas, your points to other party. But if other party is not ready to listen yourself patiently, then they will not give you feedback. And when they will not give you proper feedback, then it means that this communication does not have would have not such importance as if you get good feedback, good feedback, good response from your listeners. So listening जब तक अच्छी नहीं होगी तो you cannot give the feedback to the speaker. अब जब स्पीकर को आप गुड फीडबैक नहीं देंगे तो speaker will feel bored or upset or will be worried. Oh, I had just consumed my energy. I had used my potentials. I had collected much more information, knowledge about this business. I conveyed all these things to the other party, but they did not you see the response properly. So he will feel totally useless exercise. So genuine listening has become a rare gift. तो मैंने आपको बताया ना कि always people are fond of talking. Okay. एक टॉक करता है, बात करता है, दूसरा उसको काट के फिर दूसरा करता है, फिर उसको काट के तीसरा बात करता है, तो then again fourth जो है वो break the speech of third one and he starts speaking. तो जो पहले वाला जो फर्स्ट स्पीकर था वो क्या बात कर रहा था, क्या कह रहा था, वो भूल जाएगा बेचारा कि मैं क्या कह रहा था, मुंह लटका के बैठेगा. दूसरा बोल रहा है उसको तीसरा ब्रेक करा है, चौथा ब्रेक करा है. तो इस तरह से एक फिर वो पहले वाला ही विल ट्राई टू स्पीक एक्सप्लेन नो बाबा मैं ये कह रहा था, ये कह रहा था. व्हाट आर यू टॉकिंग, आई डिड से दिस थिंग. यस यू हैव सेड दिस. लेट हिम टॉक. Listen carefully, listen patiently. Try to understand what is he talking, what is he explaining. So let him opportunity to talk clearly and give him time to convey his thoughts to you in proper way. Then you can understand and you will be agreed, or you will not be agreed. If you will not be agreed, you will give the reasons, and those reasons will be proper. So proper. This will be the way of proper listening, and this will be the result of proper listening and proper speaking. So the better communication will work. So this is the way. First, let the speaker talk and you listen carefully. But listening carefully, patiently is rare. ये बहुत कम होता है. तो ये भी एक the gift of time. It helps build relationships, solve problems, ensure understanding, resolve conflicts, and improve accuracy. Improve accuracy. And when you listen others very carefully, it will build relationships between the speaker and you. And when you listen carefully, then the point of view of the speaker will be very much clear before you. So you can give feedback, you can give proper feedback. In this way, the problem which you were discussed with each other, that will be solved within minutes.
अब वो बात करता है, आप सुनते ही नहीं, बीच में टपक पड़ते हैं, अपना सॉल्यूशन दे रहे हैं, फिर वो बात करा, फिर वो बात। समटाइम्स पीपल क्वारल ऑन वन इंसिडेंट, बड़ा झगड़ा होता है, वो इस तरह करते रहते हैं। तो आई जस्ट मेक देम साइलेंस, प्लीज साइलेंस। अब जब मैं कह रहा हूँ साइलेंस, तो मेरे बिल्डिंग के बंदे जो खड़े हो जाते हैं कि प्रोफेसर हैज कम, सो ही विल सॉल्व द प्रॉब्लम। आई सेड प्लीज लिसन हिम केयरफुली। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ये क्या कर रहा है, आप क्या कह रहे हैं, किस बात पे झगड़ा है, कोई नोबडी अंडरस्टैंड्स यू बोथ, तो हाउ कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम, आप बताओ। तो लिसनिंग की इंपॉर्टेंस होती है कि वो जिसको तकलीफ है, जो प्रॉब्लम है जिसको आपसे, तो वो प्रॉब्लम तो बताने दो, तो अच्छी तरह से आप समझो कि वो क्या कह रहा है। When you listen carefully and understand the problem of the speaker, then you can give the reply properly. आप कहेंगे हाँ वाकई मेरे बच्चे की बहुत गलती है यार, मैं उसको समझाता हूँ, आई एम सॉरी। अब नहीं मेरा बच्चा ये आपका, मैं वो कहेगा नहीं आपके बच्चे ने ये किया, तो एक दूसरे की बात जब सुनेंगे ही नहीं, when we not listen others point of view, then how can you give the feedback, how can the both parties will solve the problem। तो मैं जब इस तरह की बात करता हूँ तो कहता हूँ फर्स्ट यू टॉक, ओके ही टॉक्स, तो उसमें बीच में ही दूसरा तीसरा जो है इधर वाला वो स्टार्ट करता है बातें। आई से प्लीज प्लीज, इस तरह इशारा करता हूँ, इस तरह नहीं कहता हूँ कि ये बात है, ये का मतलब है he is talking, तो he shut his mouth, then he speaks, then वो जो पहला प्रॉब्लम बताने वाला है ना, वो बात करता है, प्लीज फिनिश, लेट हिम फिनिश। तो वो फिर पूरी बात करता है। तो जब पूरी बात हो जाती है या किसी जगह पे मुझे इंटरफेयर करना पड़ता है, मैं कहता हूँ होल्ड इट, यस आप बताओ आप ये क्या कह रहा है। तो फिर वो बोलता है ओके नाउ ऑन दिस टॉपिक, इस बात को प्लीज आपका क्या मशवरा है, आप बताओ। तो वो बताएगा कि ये ओके लीव इट नाउ, आपने बात की, अब मैं चौथे को इन्वाइट करूंगा, अब पांचवें को इन्वाइट करूंगा, अब छह को। इस तरह से पीपल will develop their listening habit। तो फिर क्या होगा, पांचों के मशवरे आ गए, सात बंदों के मशवरे आ गए, और एक बात क्लियर हो जाएगी कि असल मौक़िफ़ क्या है, असल हल क्या है। तो इन दिस से वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम विद इन फ्यू मिनट्स। वैसे तो हम घंटों भर बातें करते रहते हैं एक एक झगड़े के ऊपर, एक बात के ऊपर, वो सवाल नहीं होता है, कोई सुनता ही नहीं है, अपनी अपनी बात करें। तो जब मैं कभी मीटिंग कंडक्ट करता हूँ अपनी कमेटी की, तो उसमें भी यही होता है कि आई जस्ट वी स्टार्ट द मीटिंग, प्लीज बी पेशेंट and listen carefully, let the speaker finish his speech, then I'll give the chance to others। तो हर एक अपने इंतजार में रहता है कि किसको इशारा होता है। तो इस तरह से आई मेंटेन डिसिप्लिन। वो ये भी एक आर्ट है कि हाउ टू कंडक्ट द मीटिंग। सो व्हेन आई टेल देम द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग, व्हेन इन द एंड ऑफ यू सी देयर मीटिंग, इन द एंड ऑफ मीटिंग जब रिजल्ट आता है, मैं कहता हूँ देखा अब कैसा सर, वाह वाकई ये बहुत मीटिंग जो थी घंटों भर तक चलती रहती थी, अब 1 घंटे में या आधे घंटे में, पौने घंटे में पूरी हो गई, और विदाउट वेस्ट अवर टाइम। आई समटाइम्स आल्सो प्लीज सेव टाइम लिसनिंग, प्लीज सेव टाइम लिसनिंग, प्लीज नाउ स्टॉप लेट हिम टॉक। तो इस तरह से जो मीटिंग कंडक्टर होता है ना, उसको भी हैंडल करना आता है, ये आर्ट है, ये सब कोई और नहीं कर सकता। तो ये भी एक आर्ट है। ओके नाउ, अब ज़्यादा बात चीज़ें हैं ना, तो मैं भी जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। तो ये लिसनिंग इट्स अ नेचुरल गिफ्ट। तो ये लिसनिंग जो है ना, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे तो जो सॉल्व हो जाते हैं, और अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं,
और इम्प्रूव एक्यूरेसी, जो असल मसला है उसकी एक्यूरेसी जो है कि हु इज राइट, व्हाट्स रियल प्रॉब्लम, दैट कम्स बिफोर ऑल द पीपल बाय listening carefully and giving the time to the speaker patiently. At work, आप कहीं काम करें, effective listening means fewer errors and less wasted time. यानी हाँ, effective listening का क्या फायदा दूसरा? अभी we are talking about the importance of listening. Effective listening का क्या फायदा होगा? Fewer errors. जब आप बात करेंगे तो पूरी चीजें बात करके क्या, अभी now you start talking तो naturally you will do less errors. तो इन रिजल्टिंग क्या होगा, आप दोनों के बीच में या आपके और दूसरे लोगों के बीच में there will be no contradiction, there will be no contradiction, there will be accuracy. तो वो बात को एक ट्रैक पे रखने के लिए listening is very important. तो उसमें you will save the time. At home it helps to develop resourceful. अभी आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं तो उसमें जब आप बात करते हैं लिसनिंग पेशेंटली, तो एक आपका भाई है, एक आप बहन है, आपका कोई हस्बैंड है, एक यू आर वाइफ, और आपका वाइफ है, यू आर हस्बैंड, तो एक और कोई रिश्तेदार बैठा है, नया आया है, तो खाने की टेबल पर या चाय की टेबल पर तो एवरीबॉडी लिसन्स पेशेंटली। तो उसमें क्या होगा कि आपको आप अपने इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेज हैं वो आप डेवलप करेंगे, यानी बहुत रिसोर्सफुल हो जाएंगे आप। हम नॉलेज कम इसलिए रखते हैं कि हम लिसनिंग कम करते हैं। You try to listen everybody carefully and collect the information and knowledge from that person. In this way, you can improve your knowledge, your information about so many topics. So when you say that start talking, you can start confident. So in this way, क्या होगा कि self-reliant kids who can solve their own problems. तो अभी बच्चों को जो सेल्फ रिलायंट किड्स होते हैं, जो अब खुद खुद एतमाद बच्चे जो होते हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करते हैं कि हमारे पेरेंट्स की तरफ से हमें राइट चीज़ों करने की हमें पूरी इजाज़त है, तो वो क्रिएट करता, वो जो है ना प्रॉब्लम्स को समझते हैं और फिर उसकी सोल्यूशन खुद ब खुद क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में भी जो है ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लिसनिंग, बिकॉज लिसनिंग बिल्ड्स फ्रेंडशिप्स एंड कैरियर्स। वी फाइंड मोर गुड स्पीकर्स, लेस गुड लिसनर्स। तो ये मैंने पहले बताया कि वी आर फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग, एवरीबॉडी इज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग, everybody tries to be good speaker, but nobody tries to be good listener. Purpose of listening. Purpose of listening to gain new information and ideas. ये तो पहले ही पता कि listening का क्या purpose है. Yes. If you listen, what will be happening? What will be the result? You can gain, you can get new information and new ideas from the different speakers. Suppose you are sitting 8 to 10 friends. So one friend talks about one idea, he talks about one idea, other person takes another idea, third person talks on other idea. So in this way, you listen carefully or patiently, सबर से सुनते हैं, तो क्या होता है कि 10 ideas which came from 10 speakers, your friends, तो वो आपको एक क्या होगा कि आप गेन करेंगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन को, बहुत सारी नॉलेज को। तो क्वेश्चन एंड टेस्ट, एविडेंस एंड अजम्पशंस। तो फिर जो है ना
you will be in good position to ask question because you have understood what the speaker has told, what the speaker has explained the things. And some questions arise, some questions arise in your mind. You can ask the question. जैसे जब टीचर कोई क्लास में कहता है प्लीज आस्क द क्वेश्चन, अभी आपने अगर पेशेंटली अच्छी तरह से सब्र से सुना है तो आपके जहन में some questions will arise and you can ask the question. So few students ask one question, most, because other students do not take interest. तो जब इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लिसन नॉट लिसन केयरफुली, तो वो उनके समझने न समझने में कोई मसला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो फिर वो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क. तो इस तरह से आप जब अच्छी तरह से सुनते हैं पेशेंटली तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं. जो एविडेंसेस और अजम्पशंस आ जाएंगी उनके ऊपर जो है आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं कि वेदर द एविडेंसेस और assumptions are correct or not. तो टू बी इंस्पायर्ड, अब यानी अगर लिसनिंग अच्छी है तो आप इंस्पायर हो जाएंगे कुछ अच्छी चीज़ों से. सो तो फिर क्या होगा, यू कैन इम्प्रूव योर ओन कम्युनिकेशन. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ पर्पसफुल लिसनिंग? Purposeful listening. What will be the result? Now, purposeful, purposeful listening, collect, you will collect much more information and knowledge, and also you will judge the ways of talking, the ways of communicating the ideas of the speaker. Then you can imitate, you can be inspired from a good speaker, from a good orator. तो फिर क्या होगा, when your turn will come, when you will get the chance to make a speech on any topic, you can talk, you can communicate in better way. So in this way you can also in this way, you can also improve your communication after having patient listening, after having good listening. So be a good listener, then you can be a good speaker. Because good speaker जो है ना वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, अपनी हाकेगा. अगर वो अच्छी तरह से उसने सब लोगों की बातें सुनी है, अब बीइंग अ प्रेसिडेंट ही गिव्स प्रेसिडेंशियल एड्रेस, तो फिर वो सारे सबकी आइडियाज को कलेक्ट करके उसके ऊपर तबसरा करके बात करेगा. तो उसको फिर वो कॉन्फिडेंस होगा और उसका इंप्रेशन होगा, उसकी इज्जत होगी, उसकी डिग्निटी होगी. You can improve your not only communication, but you can improve your personality also. So your personality will work a lot whenever you participate any meeting, any public gathering. You have already developed your image, impression, the minds of the listener or the public. So when you come on the stage, a rostrum, the whole audience will be silenced because you have developed your personality by your being a good communicator, being an effective communicator. Now, what that comes, that is the result of purposeful listening. तो अब स्टडीज फॉर ये तो हो गया कि इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग क्या है, पर्पस ऑफ लिसनिंग क्या है. अब स्ट्रेटजीज कैसी हैं, किस तरह की हिकमत अमली हम सक्सेसफुल लिसनिंग के लिए कर सकते हैं. Okay. Strategies for now be ready.
to listen quickly because there are so many slides or subheadings awaiting to explain. So face the speaker and maintain eye contact. Talking, talking to someone while they can, while they can, while they scan the room, study computer screen, or gaze out the windows is likely trying to hit moving target. अगर आप खड़े हैं अपने किसी रूम में बात करने के लिए और सिर्फ कमरे को देख रहे हैं इधर उधर या वो जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसको स्टडी कर रहे हैं और विंडोज के बाहर गेजिंग कर रहे हैं तो ये तो इस तरह होगा कि जो आपका टारगेट है उसको जैसे आप हिट कर रहे हैं तो वो टारगेट यू कैन नॉट अचीव how much of the person's divided attention you are actually getting. तो इससे फिर क्या है कि लोगों का जो माइंड है वो इधर उधर हो जाएगा, they will not focus at your listening. तो 50%, 5%, if the person were your child, you might demand, look at me when I am talking to you. But that's not the sort of thing we say to a lover, friend, or colleague. Okay? 50% या 5%. अगर वो आपके चाइल्ड हैं या तो वो क्या होगा if the person were your child you might demand क्या आप डिमांड करेंगे look at me when I am talking to you बच्चे मुझे देखो ना यार मैं जब आप बात करता हूँ मेरा बेटा मुझे देखो ना तो ये वो जो लिसनर्स हैं जो आइडल्ट्स हैं वो इस तरह से यानी you cannot say these kinds of words to your lover, friend or colleague. But उसको किस तरह मेंटेन करेंगे कि वो आपको सुने कि when you love them, you are sincere to them and you are making eye contact. Intentionally you are looking at their eyes and intentionally you are trying to get their attention. तो वो आपको सुनेंगे. In most Western cultures, eye contact is considered the basic ingredient of effective communication. यानी effective communication के लिए जो basic जो उसका element है, basic इज़ा में से बुनियादी इज़ा में से जो सबसे important ingredient है Western countries में for effective communication, that is eye contact. तो अब देखे मैं जब अमेरिका में एक हॉल में हम बैठे थे और एक प्रोफेसर था he was delivering a lecture on very special topic तो उसका हाइट पूरा सिंपल था मगर वो जब he was talking in such a way कि सारे लोग उसके साथ साथ हवा में उड़ रहे थे because उसका way of talking way of you see that verbal communication non-verbal communication words were gushing out and just he was playing with words उसके सामने खड़े थे कि हमें इस्तेमाल करो इस तरह से उसको प्रैक्टिस थी उसकी प्रिपरेशन थी उसका एक्सपीरियंस था कि वो जब उसने लेक्चर एंड किया क्लोज किया तो हम बाहर आ रहे थे तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट हिम बाय सेइंग सर he looked at me now देखो I will not say sir what you are talking no sir he turned head to me you are playing with words by talking तो ये एक जो है इसका नेगेटिव है पॉजिटिव है तो मैंने उसको पॉजिटिव कहा वर्ड्स आर जस्ट कमिंग बिफोर यू एंड दे वेट when you are going to use those words but यानी
और कुछ है कि आप लफ्ज़ इस तरह करते हैं, ऐसे ऐसे लफ्ज़ों को इस तरह अल्फाज को इस्तेमाल करके अपनी पॉइंट ऑफ व्यू का मकसद ले लेते हैं, तो ये नेगेटिव होता है। बहरहाल मैंने इसलिए से कहा था, मगर फिर आई केम टू नो कि मैंने जो उसको कहा तो ये अच्छा नहीं था। तो इस तरह से भी समटाइम्स हम कुछ अच्छी बात करने के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो कभी कभी हम अल्फाज का चुनाव सही नहीं करते हैं, उसके पीछे वो माने नहीं होते हैं जो हम कहना चाहते हैं। पर तो ये इसके बाद क्या है, आप जो है ना पुट असाइड पेपर्स, पेपर्स को, बुक्स को, फोन को, दूसरे जितने भी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपका अटेंशन डिवाइड करेंगे कि हर वक्त तो हवा लग रही है, पेपर इधर हो रहा है, आप पेपर को फिर कंट्रोल करें, फोन आ रहा है उसको आप ऑफ कर रहे हैं, तो ये इस तरह से आपका जो स्पीच है, आपकी जो स्पीच है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी फ्रॉम फ्रॉम टॉकिंग। स्पीच डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जब एक लम्हे के लिए भी आपकी स्पीच डिस्टर्ब हो गई, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जो लिसनर्स हैं, जो ऑडियंस है ना बाबा, वो ऑडियंस को एक लम्हा चाहिए अपने जहन को इधर उधर भगाने और खिलाने के लिए। पता नहीं कितने थॉट्स उसके जहन में आ जाएंगे और आपके स्पीच से हट जाएगा। अगर आप अपने ट्रैक से हट गए हैं तो तो आपने किताबें या फोन से और चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब कर रही हो, डाइवर्ट कर रही हो, तो उनको आप छोड़ दें, उसको हटा के रखें और बिल्कुल फ्री और फ्रेश रखें। यस, अगर आपके पास स्क्रीन है तो आप पॉइंट्स को देख सकते हैं, ये, या आपके पास पेपर है तो वो आप उसको पेपर में जो पॉइंट्स लिखी हुए हैं, आउटलाइंस, उनको आप देख सकते हैं, मगर इस तरह नहीं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्शन आपको आ जाए। जब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे अपने पेपर में, तो फिर क्या होगा? The listeners will be divided in their own thinking. So do not give them chance for their distractions. Look at them even if they do not look at you. Shyness, uncertainty, shame, guilt, or other emotions, along with cultural taboos, can inhabit eye contact with people under some circumstances. ये सारी चीजें you need to do practical. Be attentive but relaxed. ये नहीं है कि आप ऐसे खड़े हो गए पुलिसमैन की तरह, खबरदार अगर ये नहीं देखोगे मुझे, ये नहीं, if you not listen me carefully, I'll make you out, I'll beat you, I'll do this and that. No, don't be attentive, relaxed, relaxed. If I'll be relaxed, then I can talk for just 2 hours. And 2 hours talking is not less. So if you have made eye contact, relax. Have a sip of water. Let me sip of water. Ah, क्या कहना है, वाटर अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, हम इसकी कदर नहीं करते। जब हम पिए तो उसको you enjoy the taste of water, and sometimes you chew the water. How? Look at it. जिस तरह खाने का निवाला आप च्यू करते हैं ना, इससे कभी पानी से बेतसर नहीं होता। पानी बहुत बेतसर, बहुत अच्छी टेस्ट है, मगर वी हैव नॉट फील्ड इट।
हमने कभी पानी का जायका और उसकी इम्पोर्टेंस शायद महसूस नहीं की। जब हम रोज़ा रखते हैं या कभी धूप में काम करते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो व्हाट्स प्रॉब्लम? तो फिर पानी की अहमियत हमें पता लगता है। सो नाउ आई एम टॉकिंग कि आप जब आई कांटेक्ट होता है तो आप रिलैक्स हो जाएं। डोंट हैव टू स्टेयर फिक्स्ड एट द अदर पर्सन। एक बंदे को सिर्फ ऐसे बात करते हैं जैसे यू आर टॉकिंग ओनली वन पर्सन। सो इट इज नॉट रिलैक्सेशन। You look away now and then carry on like a normal person. आराम से देखें, नॉर्मल पर्सन लगे। इम्पोर्टेंट थिंग इज टू बी अटेंटिव, यानी ये है कि आप अटेंटिव हैं आपके अपने सब्जेक्ट के ऊपर, आपके टॉपिक के ऊपर कि आप क्या कहते हैं। तो डिक्शनरी सेज दैट टू अटेंड टू अटेंड एन अदर पर्सन मीन्स टू से बी प्रेजेंट। टू अटेंड अदर, जब मैं किसी को अटेंड कर रहा हूँ तो मैं उसके सामने प्रेजेंट हूँ। मैं अटेंड आपको कर रहा हूँ और प्रेजेंट ना हो, प्रेजेंट कहीं और हूँ, तो जिस्मानी तरह यहाँ हूँ, बातें आपसे कर रहे हूँ ज़हनी तौर पर। आई शुड बी प्रेजेंट बिफोर यू एंड आई गिव यू अटेंशन। And now you are not here to ask me questions. I just only realize that you are listening to me carefully. So, but I give attention. Now I give you attention means I give attention to the points, to the subhead headings, and explain it in proper way. It means I give you attention. Apply or direct yourself. Pay attention. Give attention and pay attention. Remain ready to serve. तो आप इस तरह यानी रेडी हो कि if anybody asks you question, if anybody needs your help, you must be there to serve him. You must be ready. One asks anything, one asks problem, you just uh, extend your helping hands to him. Mentally screen out distractions like background activity and noise. अगर पीछे से बड़ा noise आ रहा है या ये तीन बंदे हैं आपस में बैठे हैं मुझे सुन रहे हैं, चार बंदे पर सुन रहे हैं, तो थोड़ा कोई इधर से कोई आदमी आ रहा है तो एक लिसनर ऐसे करता है। तो I'll stop talking. I'll stop talking. When I see, so yes, now he focuses at me, then I'll start talking. I'll narrate my story, or I'll share the news with him, with all those three or four persons. So this is also using that art to convey your feelings proper. अच्छा, अब एक पता है क्या हो रहा था? एक बंदा आ रहा था, हाथ मुझे इस तरह मिला रहा है और बात इससे कर रहा है ऐसे। बता, मुझे हाथ दे रहा है। Now he extends hand, he shake hand with me, but talking other, इसका ज़हन इधर था, तो ये डिस्ट्रैक्शन थी ना, तो मैंने अपना हाथ खींच लिया, मैंने हाथ एक्सटेंड नहीं किया, तो नतीजा क्या हुआ? वो इस तरह हाथ देखा कि उसके हाथ से मेरा हाथ आया ही नहीं है, तो फिर अजीब सूरत हाल पैदा हो गई। जब उसने ऐसे किया, अरे मेरा हाथ तो ऐसा लटका हुआ है, जब उसने ऐसे हाथ किया तो मैंने चल दिया उसको। फिर उसने रियलाइज किया, मैंने कहा भाई हाथ मुझे मिला रहे हैं, देख उधर रहे हैं, सो यू आर नॉट प्रेजेंट बिफोर मी, तो हाउ कैन आई शेक हैंड? तो सम पीपल डू लाइक दैट कि हाथ मुझे मिला रहे हैं, देख उधर रहे हैं। तो आप प्लीज ऐसा नहीं करें, ये आउट ऑफ एटिकेट है। जब भी आप किसी से बात करें तो look at the eyes of the listener and pay full attention and be ready to listen anything from the listener. What he speaks, you listen carefully. So give 2 minutes or 1 minute or half minute to him, but you must be his. Be present yourself to him carefully. आपकी प्रेजेंटेशन, आप अगर प्रेजेंट उसके लिए नहीं है तो वो तो कहेगा यार ये तो मुझे तवज्जो नहीं था, he does not give importance, he is no,
ही इज नॉट गुड पर्सन। तो इसलिए आपको वो जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं देगा और आपके लिए अच्छा नहीं सोचेगा। सो जब आपकी स्पीकर जो है वो उनकी कभी कभी एक्सेंट या जो स्पीच है मैनरिज्म वो अगर सही नहीं होता है, टू द पॉइंट नहीं होता है, तो वहाँ डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, वहाँ सुनने वाले जो है इधर उधर देखते हैं। My tea is getting cold again. पता है कि एक 3-4 बंदे लंदन से गए जब जापान, वहाँ किसी जापानीज फ्रेंड ने उनके लिए बड़े एहतमाम से काफ़ी बना के आगे रखी, और वो 3 बंदे जो हैं वो काफ़ी पी रहे हैं ऐसे। तो जापानीज जो है वो बड़ा परेशान हो गया, तो उन्होंने अपने दोस्त को परेशान होते, जापानीज दोस्त को परेशान होते देखा तो पूछा क्यों, व्हाट हैपेंड? इट्स नॉट काफ़ी, इज नॉट कॉफ़ी गुड मैन, या काफ़ी अच्छी नहीं है? अरे बहुत अच्छी है। उसने कहा आप आवाज़ ही नहीं निकालते। अब देखें, ये ये एक स्पीच मैनरिज्म होता है, ड्रेस मैनरिज्म होता है, और जनाब चाय पीने के भी मैनर्स होते हैं। तो हर कल्चर में मैनरिज्म वेरी करते हैं। क्या है कि जब जापानीज जब तक इस तरह जैसे आवाज नहीं निकालते व्हाइट सिपिंग द कॉफी और टी, इट मीन्स दे आर नॉट एंजॉयिंग कप ऑफ टी और कप ऑफ कॉफी। बट हमारे यहाँ जो हम इंग्लैंड ब्रिटिश के हम गुलाम रहे हैं ना, तो हम जो है वो हमारा जो चाय पीने के मैनर्स हैं, जो पानी या खाने पीने के मैनर्स हैं, बड़े बड़े एहतराम से स्पून और कांटे उठाते हैं, और बड़े एहतराम से हम चाय का कप लेते हैं और आराम से इस तरह पीते हैं कि आवाज़ नहीं निकलती। अगर आवाज़ निकालते हैं ना, तो इधर उधर के लोग सब आपको देखेंगे कि यार कैसे चाय पी रहा है, तो जट है, रिलेटेड पर्सन। तो मेरे भाई, ये हर कल्चर का अपना मैनरिज्म होता है। जब तक हम चाय में बिस्किट डुबो के नहीं खाते तब तक हमें बिस्किट का मजा नहीं आता। और वो जो अंग्रेज पर्सन के फॉलोअर्स हैं ये, क्योंकि अंग्रेज चाय में बिस्किट डुबो के नहीं खाता, वो बिस्किट मुंह में डालता है, खा के फिर चाय की सिप करता है। तो ये खाने पीने के भी मैनर्स होते हैं, बात करने की भी तमीज़ होती है। तो ये हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, और रिलैक्स होके हम अपनी बात कर सकते हैं कि उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन न पैदा हो लिसनर्स के बीच में। फाइनली, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय योर ओन थॉट्स, फीलिंग्स और बायसेस। अब मैं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और मैं चाय पी रहा हूँ, तो आपका ज़हन इधर उधर जाएगा, तो मैं जल्दी जल्दी चाय पी लेता हूँ। मेरे घर वाले मेरा बहुत ख्याल करते हैं कि बाबा अभी तक बात कर रहा है इस तरह से, और उनको समझा रहा है तो थक गया होगा, इसलिए पानी दिया मेरे पोते ने और चाय भी लेके आया। बहरहाल, तो अच्छा, आप व्हेन यू आर जस्ट एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स, फीलिंग्स, यू शुड नॉट बी बायसेस, मुतसिब न हो, रिलैक्स्ड हो, नॉर्मल बंदे की तरह बात करो, जिसमें आपके बात में, ख्यालात में किसी किस्म की बदबू न हो। बायस का पर्सन का मतलब है कि आप किसी के लिए तअस्सुब या नफरत का इजहार कर रहे हैं, तो ये आपके बातों में बदबू फिर नजर आएगी, तो जो दूसरे लोग सुनने वाले हैं तो वो परेशान हो जाएंगे कि ये तो मुतसिब है, तो पीपल विल नॉट लाइक यू, दे विल नॉट लाइक टू लिसन यू। कीप एन ओपन माइंड, ये अभी नया आपका हेडिंग आ गया।
Listen without judging the other person or mentally criticizing the things she tells you. तो जब आप लिसन कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग, तो उसमें आप जरा सिर्फ लिसनिंग करें, आपको इस ऐसा इंप्रेशन नहीं दें कि मेंटली यू आर क्रिटिसाइजिंग द थिंग्स व्हाट शी टेल्स यू, व्हाट ही टेल्स यू। तो आपके जो फेस जेस्चर्स हैं वो अच्छा, okay, completed. Okay, so 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 when anybody speaks, you listen with an open mind. You don't make any opinion or criticism in your mind to show the speaker. So if she says alarms, you go ahead and feel alarmed, but don't say to yourself, well, that was a stupid move. As soon as you indulge in judgment, amusements, you have compromise your effectiveness as a listener. तो आपका अच्छे कम जो है ना इफेक्टिव लिसनर के लिए ज़रूरी है कि आप डोंट मेक एनी comments or opinions or criticism in your mind for the speaker. Let him talk and you listen carefully. So listen without jumping to conclusions. अब वो आगे कुछ बात उसने मुश्किल से की है, just you conclude yourself. तो आप कहते हैं ये तो ये है, तो वो कहता है भाई पूरी बात तो सुनो, तो you let me explain or tell you the whole story, then you can judge, then you can make the conclusion. So remember that the speaker is using language to represent the thoughts and feelings inside her brain. उसके अंदर में जो जहन में ख्यालात हैं वो बात कर रहा है ना. ही इज नॉट टॉकिंग about the ideas or thoughts which are in your brain. So अभी क्या होता है कि everybody is fond of listening of his own choice. Everybody is fond of speaking of his own choice. So you are fond of talking of your own choice. तो अभी वो जो लिसनिंग जो करता है ना, वो मैं सोचता हूँ कि वो जो लिसन करे वो भी मेरी पसंद से ही सोचे कि मैं जो कहता हूँ कहते हैं हाँ ये ठीक है. लोग तो हम अपनी पसंद से बात करते हैं और पसंद का ही सुनना चाहते हैं. हियर कंट्राडिक्शन स्टार्ट्स, हियर क्वारल स्टार्ट्स, तो झगड़ा शुरू होता है. भाई
वो उसकी पसंद है, उसकी आइडियाज हैं, आपका ओपिनियन दूसरा हो सकता है, यू मे डिफर इन, ही और शी मे डिफर यू। तो इस तरह से आप ओपन माइंडेड हो, ओपन हार्ट, वाइड हार्टेड हो कि वो क्या कहता है, लिसन केयरफुली, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है फिर आप उस तरह से बयान करें जिस तरह आप सोचते हैं, तो वो भी आपको उस तरह से सुनेगा। इस तरह से एक प्लेजेंट प्लाजिबल एटमॉस्फेयर होगा जिसमें बात करना और सुनना जो है वो अच्छा आसानी से होगा। डोंट इंटरप्ट एंड डोंट इम्पोज योर सॉल्यूशंस। अभी आपने बात की नहीं, उसने बात पूरी की नहीं, तो आप अपना, यू आर ट्राइंग टू इंटरप्ट एंड इम्पोज योर सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम। तो इट्स not, you see that you are not sending a message, a good message across। तो वो जो है स्पीकर जो है उसका अपना प्रोग्राम है, अपनी रियलिटी ऑफ प्रोग्राम्स है, और जो टॉक है वो सारे दलाल और दलील के साथ उसकी मजबूत जड़ें पकड़ी हुई हैं। तो आप एकदम एक कंक्लूड करें और एक रिमार्क पास करेंगे तो दैट विल बी जस्ट aggressive in your face behavior is condoned, if not encouraged। तो आपको माफ तो कर सकते हैं मगर वो इनकरेज नहीं किया जाएगा, उसको पसंद नहीं किया जाएगा। तो डोंट इंटरप्ट, बीच में कभी भी किसी को इंटरप्ट नहीं करो। अगर अच्छा एक बात और, कोई एक बात बताता है तो पहले अभी थोड़ा कोई ही स्पीक्स तो आप क्या कहते हैं, हाँ सर ये आपने पहले बताई थी। अरे तो वो तो मुंह चबा के रह जाएगा ना। तो भाई अगर आपने पहले भी सुनी हुई है या कहीं और सुनी हुई है तो लेट हिम स्टॉक। तो चार बंदे और जो हैं उन्होंने नहीं सुनी है, तो कभी भी स्पीकर को आप इंटरप्ट नहीं किया करो। अगर आप बात कर रहे हो और कोई आपको इंटरप्ट करे कि भाई हाँ हाँ ये तो मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है, ये आपने इंटरप्ट किया और इम्पोज किया आपने अपनी बात को, अपने ख्याल को उसके ऊपर। तो ये जो है ना, ये इंटरप्शन जो है ना सेंड्स अ वैरायटी ऑफ मैसेजेस। आई एम मोर इम्पोर्टेंट देन यू आर। तो वो कहेगा हाँ मैं तो आपको से मोतबर है, आई एम मोतबर, आई एम मोर इम्पोर्टेंट देन यू। तो इंटरप्शन का मकसद यही होता है। और जब व्हेन यू एक्सपोज योरसेल्फ कि यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन मी, तो मैं आपको कबूल नहीं करूँगा। मैं अगर एक्सपोज करूँ कि आई एम मोर इम्पोर्टेंट देन यू, तो आप मुझे कबूल नहीं करेंगे। तो आप बी फ्रेंडली टू अदर्स, don't realize that you are more important, don't expose it. So don't really care what you think, don't have time for your opinion. This isn't conversation, it's a contest and I'm going to win। तो ये कोई बहस मुबासा जीतने वाली बात नहीं होती है। कोई सिर्फ कन्वर्सेशन नहीं है कि आप, मैंने सवाल किया उसने जवाब दिया, उसने सवाल किया उसने जवाब दिया। तो you just be patient, listen patiently, give the speaker regular feedback। तो अच्छा जब एनी स्पीकर बात करता है तो आप उसको अपना हेड जो है, अपना हेड नोट करें। तो बाय नोडिंग योर हेड, it means the speaker when sees your nodding your head, तो इसका मतलब ये है कि आप स्पीकर की फीलिंग को समझ रहे हैं, जो थॉट्स हैं वो आप समझ रहे हैं। and sometimes you must be thrilled and what a terrible cordial for you, I can see that you are confused, that the speaker's feelings are hidden or unclear, then occasionally paraphrase the content of the message। तो जब यानी when you feel के what you talked listener feels confusion, then you rephrase it, means you tell the same thing in other words just to make him understand। तो इस तरह से आप फीडबैक स्पीकर को देते रहें। अच्छा, the idea is to give the speaker some proof, the idea is to give the speaker some proof that you are listening। तो आप इस तरह से आइडिया दें इसको कि you are listening the speaker। In task situations,
regardless of whether at work or home, always restate instructions and messages to be sure you understand correctly. आप कहीं भी हो, अपने घर में हो, ऑफिस में हो, you must show that you are listening that speaker very carefully, and so you give feedback to the speaker by showing some face expressions or hand or head movements. Results of good listening. As हमने पढ़ा results of good speaking और results of good listening. अब ये क्या है कि it leads to help you positive attitude. अगर आपने अच्छी तरह से किसी को सुन रहे हैं तो you can win the positive attitude from the speaker. You can win the positive attitude from other people. So attitude is very important. So improves two-way communication. इससे फिर क्या होता है, जो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि two ways communication बेहतर होगा कि when you listen carefully, you can give the feedback, you can understand the things of the speaker very well, and you can ask him question. He can give the answers. In this way, you listen carefully. Then again, when you talk, other person listens carefully. So in this way, uh, it improves two-way communication that solves problem very quickly. So good feedback encourages speakers speech. तो जब आप अच्छी तरह से फीडबैक देते रहेंगे, वो जो स्पीकर है जो पहले अच्छी तरह से बोल भी नहीं पा रहा था या अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, if you encourage him, encourage the speaker, then he will develop his confidence and correct ideas or correct thoughts will come out from his mouth or brain, and he can tell you more good things. So इस way results of good listening बहुत अच्छे होते हैं. Helps the speaker to be open and sincere. तो इससे फिर क्या होता है? If you listen patiently, then the speaker will give you his open mind and sincerity. Tips for effective listening: ask others who speak rapidly to slow down and or pause from time to time. Can understand you better if you speak more slowly. अच्छा, तो इसमें ये क्या होगा कि यू आर गुड लिसनर, तो कभी कभी क्या होता है, सर स्पीक मोर स्लोली, और कभी कभी आवाज हम समझ नहीं सकते, सर स्पीक लाउडली. इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड यू बेटर. तो ये भी इफेक्टिव लिसनिंग के लिए बहुत अच्छा है कि अगर वो आप मैं इतना तेज बोलता हूँ तो आप अच्छी तरह से सिर्फ आवाज में सुनते हैं, वर्ड्स तो आपके जहन में आते ही नहीं है, तो फिर यू कैन नॉट अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू. तो इफेक्टिव लिसनिंग ये होती है कि आई शुड टॉक मोर स्लोली एंड आई शुड कंसीडर द पिच ऑफ माय साउंड. तो वो अगर दूसरे लोग अच्छी तरह से आवाज नहीं सुन रहे हैं तो मैं तेज आवाज बोलूँ. अच्छा, अगर आस्क अदर्स टू रिफ्रेश, अगर आपको वो इंफॉर्मेशन सही समझ में नहीं आ रही है तो यू रिक्वेस्ट हिम, सर this is good way what you are telling us, but if excuse me sir, if you rephrase it, if you explain it in other words, then it will be you see that very good, okay, I can understand better. So instead of saying oh what or pardon, तो ये अगर आप सुन नहीं रहे या समझ नहीं रहे तो आप ऐसे अल्फाज निकालेंगे तो इट्स आउट ऑफ etiquettes. So just please, sir, please excuse me, sir, speak somewhat loudly. Please speak slowly. Please rephrase it. You please may explain it in other words so that I can understand you better. So these are the ways for an effective listener. टिप्स फॉर इफेक्टिव लिसनिंग ये और है कि अगर आपको वो कोई बंदा आप अच्छी तरह से नहीं सुन रहा है तो आप उसके करीब जाओ, या आप अगर अच्छी तरह से नहीं सुन सकते हैं तो आप उसके करीब जाओ, और अगर नॉइजी इन्वायरमेंट्स है, पोजीशंस जो है वो आपके पीछे बड़ा आवाज़ आ रहा है, दिस विल हेल्प यू फोकस ऑन द पर्सन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू. तो फिर वो जो है ना
आपका फोकस जो है ना वो अच्छा नहीं होगा. मूव टू अ वेल लिट quieter location. Whether background voice is raised, likely to interfere with the conversation. जब आप एक दूसरे टॉक करते हैं तो बड़ा आवाज़ होता है, जनरेटर चल रहा है, लाइट ऑफ है, बच्चे शोर करें, तो हम किसी को कहेंगे प्लीज let us go out so that we can understand easily. तो ये भी एक इफेक्ट लिसनिंग का है. अगर कोई कानों से सही तरह से नहीं सुनता है, उसकी लिसनिंग जो पोजीशन है वो ज़रा वीक है, तो आप उसके करीब जाओ, या वो खुद जो बंदा अच्छी तरह से थोड़ा कम सुनता है तो ये खुद उधर चला जाए. मैं इस्लामाबाद गया था, तो उधर क्या हुआ कि जब हम सरकारी दौरे पे थे, उधर हम जब एक सरकारी हॉस्टल में गए, वो जो केयर टेकर था, जो बड़ी उम्र का था, वो उसने कहा सर एक्सक्यूज मी, मैं आपको एक अर्ज करना चाहता हूँ. हमने कहा हाँ भाई सुनाओ. कि सर क्या है कि मैं कुछ कम सुनाई देता है मुझे, इसलिए प्लीज डोंट माइंड. अब ये उसने ये नहीं कहा कि आप तेज बोलो, वो खुद अपने लिए कहता है कि सर मैं कम सुनता हूँ, प्लीज यू डोंट माइंड. तो इसका मतलब मैं कम सुनता हूँ, तो इसका मतलब है मैं, वो हमें इनवाइट करा था कि हम तेज बोलें, अगर वी डोंट माइंड. तो ये एक तरीका होता है, ये इंडिकेट्स होते हैं. बट योर, तो अब ये है कि अजान आ गई है मगरिब की और नमाज टाइम हो रहा है, तो मैं आई एम ट्राइंग टू फिनिश इट क्विकली. यू कैन आल्सो सजेस्ट वेज अदर्स कैन हेल्प यू हियर बेटर. तो आप दूसरों को भी अच्छी तरह से सजेस्ट कर सकते हैं कि इस तरह आप करेंगे तो अच्छी तरह से आपकी लिसनिंग बेहतर होगी. So uh, this is very important. These are very important tips for effective listening. Please, you read it again. You listen it again, so that you can advise others. So may they listen you carefully. If you are listening less, आप सुनने की कुवत आपकी कम है, तो आप वही स्टेप्स अदा करें जो है, तो आपका एक कन्वर्सेशन वेरी कंफर्टेबल होगा. Thank you very much. See you next time. Allah Hafiz.